lose weight, and most importantly, maintain the weight. So, chaliye, before this session starts, so usse pehle we have to understand the what is weight, the obesity, and how it becomes. Slowly, that obesity can become very, very dangerous when it comes to in terms of health risks. So, चलिए start करते हैं इस छोटे से प्रेजेंटेशन के जरिए. एक ही क्वेश्चन है कि what is the difference between these two? What is the similarity between these two? You know, I'm sure Shatabdi can talk on behalf of the audience as you're the host. What is the similarity between these two? मुझे तो दोनों ही सेम लग रहे हैं सर, बोथ आर लुकिंग सेम। So the इन दोनों पिक्चर में क्या ऐसा चीज है जो दोनों में सिमिलैरिटी है? सो एक है पेट्रोल टैंकर का ट्रक और दूसरा है एक मोटा आदमी. So one is a petrol tanker truck which has an entire tank of petrol, and another person is a very, very fat person, obese person. Now, what is the similarity when it comes to weight management? दोनों में जैसे शताब्दी ने बताया, दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है. Both are same. The reason is, for example, the petrol tank, the lorry, the truck, it carries a petrol tanker. It's full of petrol or maybe diesel, for example. But when it, अगर उस गाड़ी में डीजल खत्म होगा, तो वो टैंकर से निकाल के यूज नहीं कर पाएगा. वो जाना पड़ेगा एक पेट्रोल स्टेशन को, एंड उधर से वो रिफिल करना पड़ेगा. मतलब जो टैंक में है, इट इज गोइंग टू बी द सेम, कोई कमी नहीं आएगा. फिर भी जब पेट्रोल या डीजल खत्म होता है, वी हैव टू गो टू द फ्यूल स्टेशन एंड refuel the thing. Exactly the same way, this somebody becomes obese means his body is full of energy or full of fat, full of reserve fat or reserve energy, but his body will not use that reserve energy, but it has to ask every time it becomes hunger, वो भूख लगेगा तो आपको खाना देना ही पड़ेगा. सो आपका पेट, आप में ज्यादा फैट है. फैट का मतलब है कि यू आर ओबीस एंड यू हैव लॉट ऑफ फैट accumulated ओवर योर बॉडी, और एंड इट्स लाइक अ रिजर्व एनर्जी. बट वो बॉडी कभी भी यूज नहीं करेगा, बल्कि जब आपको भूख लगेगा, you have to go and eat. I grab your breakfast, grab your lunch, grab your dinner. So it is the exact way. So now, how this works? So this is the simple way I can explain the obesity means. I am obese, but I have to eat my breakfast, because I have to eat my lunch, I have to eat my dinner. Now this is the similarity between the two things which a common man, एक साधारण व्यक्ति को मैं समझाना चाहता हूं कि आपका ये पेट्रोल टैंकर का व्हीकल की तरह ही आपका पूरा भरा हुआ है, पूरा टैंकी भरा हुआ है, लेकिन यूज नहीं कर पा रहा है. उनको जाना पड़ेगा पेट्रोल टैंकर या एक पेट्रोल स्टेशन में जाके ही वो अपना गाड़ी चलाने के लिए आपको पेट्रोल फ्यूल स्टेशन जाना पड़ेगा, रिफ्यूल करना पड़ेगा. एक्जैक्टली द सेम वे, यू आर हैविंग accumulated fat over a period of years, and you are not able to use it, and you have to keep on eating it. Now that is how the body functions. So obesity is a very big, very, very big concern today. 73% of the urban Indians are obese. Means out of 4 Indians, 3 are overweight. So उसका मतलब है कि almost 73% are obese का मतलब. और आज के डेट में it is risk. The risk factor is from 28 years to 38 years, especially the men and women. The average goes from the healthy at 26, and by the time 38 ka time pe most of the people are obese. So weight man, obesity is a big concern. और उस कंसर्न से क्या क्या आ सकता है, सो दैट इज वेयर आवर गोल इज टुडे. आज कैसे हम 3 प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और एक विनिंग फॉर्मेशन को हम अंडरस्टैंड करेंगे. अभी क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है. इट इज वेल क्लियर अक्रॉस योर बॉडी. ओबिसिटी का मतलब है द मदर ऑफ ऑल डिसीज. आपने सुना होगा कि द मदर ऑफ ऑल डिसीज का मतलब है अगर आप ओबीस है, मतलब आपको सब कुछ आने का चांसेस है.
That means you can get from a neurological point, you can get a stroke, dementia, including Alzheimer's, vision loss, diabetes का complication आ सकता है, respiratory health में problem हो सकता है, pulmonary hypertension हो सकता है. अगर आप urological एरिया में देखेंगे, देन इट कैन हैपन, किडनी डिसीज आ सकता है, डायबिटिक रिलेटेड किडनी डिसीज आ सकता है, सर्कुलेटरी रिलेटेड में हो सकता है, तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है. इट गोज ऑन. एंड अगर आप मस्कोस्केलेटन की बात कर रहे हैं तो आपको आर्थराइटिस भी आ सकता है, लो बैक पेन आ सकता है, साइकोलॉजिकली तो डिप्रेशन आ सकता है, एंग्जाइटी आ सकता है, एंड ईटिंग डिसऑर्डर. एंड अगर आप पेट या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम कोलोन कैंसर टू फैटी लिवर, ऑल दीज आर दी tipping या risk point when you're obese. Now, I don't have to explain because it's very, very clear that, obesity can lead to hundreds and hundreds of health conditions in the coming days. So, अभी आपको जब आप अपने शीशे में देखेंगे, when you look into the mirror, how do you want yourself to be? Like a inverted triangle, yeah, like a triangle. So, हर एक व्यक्ति, everybody wants their body to be in this shape, correct? Like a bottle, like a glass. But over a period of time, their body becomes like a inverted glass. या हम एक triangle के जैसे बन जाते हैं. Now, I'm sure we all want to be, every time when we look into the mirror, we always want to be fit and fine. Now, obesity का एक और problem है कि मेजोरिटी लोग बोलेंगे सर अभी मुझे 3 महीने में 6 महीने के अंदर मुझे वेट लॉस करना है. बट आप एक चीज जानिए, ओबेसिटी एक ओवरनाइट का प्रॉब्लम नहीं है. इट इज एन अक्यूमुलेटेड इशू, एंड अक्यूमुलेशन इट कम्स एज अ पार्ट ऑफ इयर्स ऑफ. अगर आप बोलेंगे कि सालों की मेहनत की वजह से ही हम मोटा मोटा बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, 90% लोग जब वेट लॉस को प्रोग्राम जाते हैं, उनको पहला क्या चाहिए? उनका पेट. दे वांट टू रिड्यूस द टमी, एंड slowly. So first the goal is to reduce the tummy. But अनफॉर्चुनेटली, जब आपका बॉडी जब वेट गेन करता है, इट हैपेंस फर्स्ट. आपका टमी में वेट होता है, आपका स्टमक में वेट आता है, उसके बाद लोअर एब्डोमेन में आता है, उसके बाद थाइस में आता है, वेट गेन होता है, उसके बाद बटक्स, उसके बाद अपर बॉडी, और फाइनली ऑन टू द फेस. सो जब वेट गेन, व्हेन यू पुट ऑन वेट, फर्स्ट हैपेंस ऑन द tummy, then to the thighs, the buttocks, the upper body, the chest, and the other places, then finally the face. But जब आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, when you want to reduce weight, it doesn't happen the same way. It happens the opposite way. It reduces from the face, then the upper chest, then it goes to the buttocks, then the thighs, finally the tummy. But our goal is always what? I want to reduce my tummy. It will not happen. So now, those days, पुराने जमाने में लोग बोलते थे कि eat breakfast like a king, राजा की तरह ब्रेकफास्ट का वो, eat lunch like a miser, मंत्री की तरह, आप लंच खाओ, और एक भिखारी की तरह या एक बेगर की तरह आप डिनर खाओ. Now, that is how the nature has created us. So if you want to be like this, your eating method also has to be like this. If you are eating like this, the automatically your body also can go in this shape. Now, let's understand more about the BMR and the obesity. So, आपका एज के अनुसार आपका बीएमआर, जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो धीरे 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 कम हो सकता है. आप देखिएगा, जब आप 25 इयर्स में थे, आपका हीटिंग हैबिट्स कुछ भी हो, और फिजिकल एक्टिविटी भी रहेगा, और आपका नॉर्मली बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा ही होगा. For example, you would have seen many people when they are very young, maybe in the teenage, their BMR is so high that you would have seen them eating, double the time of food, 2 times the food what you're eating today, or maybe somebody is eating, and still they are very lean, because the body's expenditure and is very very high. So because वो BMR ज्यादा है, और इसलिए वो weight नहीं बढ़ रहा है. So the resting metabolic rate and the body basal metabolic rate, ये दोनों
डायरेक्टली रिलेट करता है आपका ओबेसिटी की ऊपर। सो बीएमआर एंड ओबेसिटी का मतलब है कि फिजिकल एक्टिविटी डिक्रीजेस एंड लीड्स टू ए डिक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट। इफ एनर्जी एक्सपेंडिचर ड्रॉप्स मोर देन एनर्जी इनटेक, वेट गेन विल ऑकर। अभी आपको मैं कैसे अंडरस्टैंड करूं? इट्स पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कैलोरी क्या है और बीएमआर क्या है। So first you need to understand, before understanding weight loss or before understanding obesity, you should understand the calorie and the BMR. Calorie is like आप बाहर से यूनिट्स डालते हैं, आप कुछ खाना खाएंगे तो आपको एनर्जी बनाने के लिए, एनर्जी बनने के लिए कैलोरीज चाहिए ही चाहिए। सो अलग तरीके से कैलोरीज आपको बॉडी में बन सकता है। वो कार्बोहाइड्रेट से बन सकता है, प्रोटीन से बन सकता है, फैट से बन सकता है। जो भी आप खाएंगे बॉडी के अंदर जब आएगा, इट बिकम्स एज अ कैलोरी। Now, what is BMR? BMR is like a life sustaining, metabolic rate. So BMR का मतलब है कि आपका जो गैस, या जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर आप फर्स्ट गियर में डालेंगे, तो एक्सीलेटर डालेंगे, तो आपका एक्सेलरेशन क्या है? इट स्पेंड्स मोर ऑफ पेट्रोल, इजंट इट? सो सेकंड गियर में डालेंगे, पूरा थ्रॉटल दबाएंगे, सो इज द फर्स्ट, इज द टर्बो, ये बोलते हैं। सो बॉडी का बीएमआर varies from time to time depending on your activity and depending on you the way what you eat. So calorie का मतलब है कि क्या अंदर आया, और बीएमआर का मतलब है कितना बर्न हुआ या कितना स्पेंड हुआ। सो अगर कैलोरी, सो स्पेंडिंग कैपेसिटी कम है और कैलोरी ज्यादा है, तो वेट लॉस, वेट गेन है। अगर कैलोरी ज्यादा है लेकिन फिर भी आपका स्पेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा है, तो आपका वेट लॉस ऑटोमेटिकली हो सकता है। सो इट इज लाइक ए, इन अनदर एनालॉजी आई कैन से दैट योर बॉडी बीएमआर इज लाइक ए गैस का जो बर्नर होता है ना। आप फ्लेम को इंक्रीज कर सकते हैं, और फ्लेम को यू कैन रिड्यूस द फ्लेम आल्सो। वी कॉल दिस एज अ हाई फ्लेम, देन वी मेक इट एज अ लो सिम बोलते हैं। सो स्लो कुकिंग के लिए यू पुट इट इन सिम, एंड फास्ट कुकिंग के लिए यू इंक्रीज द बर्नर, एंड इट स्टार्ट्स। So what happened? The energy which is there in the body, which is coming through the calorie, it starts burning faster and faster. So the BMR is the spending capacity, calorie is the incoming food, and वो energy units आ रहा है, और कितना आया, कितना स्पेंड किया, दैट इज हाउ द बॉडी फंक्शंस। अंदर कितना आया एनर्जी, उसको कैलोरी बोलते हैं। कितना स्पेंडिंग कैपेसिटी है, कितना स्पेंड हुआ। सो ये नॉर्मल, अगर किसी का 1700 है, किसी का कैलोरी इनटेक, और बॉडी का बीएमआर है 1800, वो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ही विल नॉट गेन वेट। सो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज कैलोरी एंड व्हाट इज बीएमआर। नाउ व्हाई एम आई सेइंग दिस? Because obesity is directly related to not only what you eat, but also how you eat and when you eat. So for example, how your body functions. So बेसिकली आप वेट लॉस का, शुरुआत में मैंने बताया था कि ईट लाइक ए किंग, ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक ए किंग, लंच लाइक ए माइजर, एंड डिनर लाइक ए बेगर। सो बट टुडे वी आर डूइंग द ऑपोजिट वे। Breakfast we are eating, very calorie is low, or maybe the food does not have the nutritional value. So, and lunch high calorie, and the dinner is super high calorie. Now how does it work? How does your body understand? So जैसे मैंने बताया, BMR is your life saving stuff, because your body is like a engine. जिस दिन आप, when the day you're born, the engine has started. Correct? So it has to keep it alive. So the BMR will play its game. The body's metabolic rate will play its game to sustain your life. So that is how the entire body is functioning. So BMR is the most important thing in your when it comes to your activity, or when it comes to energy expenditure. So अभी कैसे, क्या होता है और क्या करना चाहिए? What is that we do and what is that we actually should do? So currently we are eating
very low nutritious breakfast, which is no fiber, no protein, nothing but maybe, so जल्दबाजी में हमने क्या किया कि आपने कुछ खाना खाया और ब्रेकफास्ट एक टोस्ट खाया और एक maybe some tea, and you just go to the office. So breakfast is a very important thing. After 8 to 10 hours of gap, the body has awakened and it needs very nutritious food. So that is where in the olden days they say you have to eat your breakfast like a king. समझ लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल यू टुक 400 यूनिट्स एज एनर्जी और यूनिट्स आपने ब्रेकफास्ट की तरह खाया, सो बॉडी विल अंडरस्टैंड, ओके माय बॉस has given me only 400 units of breakfast, so it will understand that it will calibrate its BMR and say that maybe for lunch also it will give only 400 units. So what it will do is it will slightly reduce the BMR, it will reduce the BMR, and we'll be ready to process the energy expenditure. अगर समझ लो कि खाना दोपहर को कम आएगा तो क्या करेगा, उसी से मैनेज करना पड़ेगा, सो बीएमआर को कम कर देगा, इट विल रिड्यूस द बीएमआर एंड वेट. बट इन लंच व्हाट हैपेंड, यू गो, यू नो योर कोलीग्स या किसी दोस्त आया and suddenly you went out and had a mast super duper lunch, so you gave, instead of 400, body was expecting 400, but you gave 800. What did it do? It cannot do anything because body was only ready for 400. The BMR was ready only for 400, but you gave 600. So 200 units is gone extra. So automatically body will say, keep the 200 units side and, as our reserved fat. Then the body will be expecting, okay, in the evening, okay, I will get 600 because lunch came at 600. Now in the evening, the dinner was super, with family. Wife ne kuch mast khana banaya. You are happy. You had one rasagulla, one this one, that one, all put together, one close to 1,000 calorie. But your body was waiting for 600 calorie. But you gave 1,000 calorie, 400 units extra. So that is how you put on weight. That is how you become like a tanker lorry. Fat is accumulated, but still you should keep on eating because daily आपको खाना चाहिए ही चाहिए. अगर आपने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, सो जो पुराने जमाने में क्या बोले थे, eat like a king, lunch, sorry, breakfast like a king, lunch like a miser, and dinner like a beggar. So we have to turn around. So not just eating the right food, it is also the right timing. So breakfast has to be super nutritious and heavy and high. So automatically what will happen is, so low calorie but highly nutritious, the body will start working towards it. So that is the best way to lose weight. And how to increase the BMR. So normally physical activity कुछ भी नहीं हो रहा है. So the BMR increase करने के लिए, basal metabolic increase करने के लिए, you should do exercise. But if you are having a sedentary lifestyle, so you cannot increase your BMR. Either you have to do physical activity or you should have the right supplement, to do it. So how to tackle the body's distribution? So having a protein shake in the evening does not going to solve your problem. Having the breakfast right makes the solution for you. So how do we start now? Now that is where 3 month, 3 product and one goal. So 3 month, 3 product, one goal. Why 3 month? 90 days is minimum आपको करना ही पड़ेगा if you want to achieve a decent goal. Now, how do I know that I have to lose weight? There are two ways to to know that you have to lose weight. One is just check your what do you call that, height, if it is 170 meters, and check your weight. So if it is 170 centimeters is your height and your weight is 80, that means आपको सिर्फ out of 170 you have to remove the 100, what is left is 70, and what is your weight is 80. That means you have to lose 10 kilos. So if you're 160 and your weight is 70, again you have to lose 10 kilo. So that is how you have to arrive. So first you have to check your height and your weight. That becomes your goal.
The what is the goal? The first goal is to reduce the weight. So how will you check? Every time I cannot. A very simple method also. अगर आपके पास एक अच्छा सा बढ़िया सा रस्सी है, तो आप घर में कुछ भी पड़ेगा, एक nice decent rope or small string. You can just measure your height with that string, make it into half, fold it into half. Then you can keep around the waist and to the belly. So अगर वो half करने के बाद अगर आप belly का वो क्या बोलते हैं उसको, पेट को पीछे से जब आप इसको जैसे बेल्ट की तरह बांधेंगे, इफ द बोथ द थिंग टचेस, दैट मींस यू आर अ परफेक्ट वेट. इफ इट डजंट टच, you have to lose weight. If it is more, it is coming crossover, that means you have to gain weight. So the simplest way is always check your height and check your weight. If you are whatever the height, remove 100, that should be your weight. So if you are 163, so remove 100, 63 should be your ideal weight. If you are 150, 50 should be your ideal weight. So that is where how you have to. So the first thing is measure your weight and your height and arrive saying, okay, now I need to reduce so much weight. So there are three ways. First is to reduce the weight, and next is to manage the weight. So एक बार आपका गोल अचीव कर दिया, मतलब आपको वेट मैनेज करना है, क्योंकि बहुत सारा डाइट होते हैं. बिकॉज आप अपना बॉडी को चीट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट चीट योर बॉडी. एक बार आप उसको चीट कर सकते हैं. यू कैन चीट योर बॉडी one time by giving some kind of a trash diet and all the stuff. Your body will lose. Next time you try, it will not work. That is how your body, because body is doing it just to protect you and to ensure that you're all, it will try all the best thing to protect your life. So how to start? So the three products, 3 month and one goal. So please understand that you cannot achieve a good weight loss in just 1 month. So that is why 3 month is compulsory. Set your goal, mark your calendar, say that, this is what my height is, this is what is my weight is, and this is how much I have to reduce. इतना मुझे reduce करना ही है. वो 10 किलो हो सकता है, 15 किलो हो सकता है, 20 किलो हो सकता है, या 5 किलो भी हो सकता है. And that is how you have to start. Now we have three products and to achieve this goal. So अगर आप 3 महीने effort डालने के लिए ready हैं, and if using the three products, believe me, the goal is very very clear. Whatever you want to achieve, certainly it is going to happen. Now, but before that, Blue Life recommends that please ensure that आपका body को detox करे. Why it is very very important is, before you go for weight loss regime, you have to cleanse your system so that your does not body becomes more at receiving end, and it can it can reciprocate with whatever you're doing during the weight loss regime. So first thing is always do the detox. पहला आप हर एक कस्टमर को डिटॉक्स करवाना ही पड़ेगा. सो डिटॉक्स सभी को पता है. इट इज अ 14 डे, 14 डेज का एक पावरफुल डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिजुविनेशन का प्रोग्राम है. 7 दिन आप डिटॉक्स करना है और 7 दिन आपको बॉडी को रिजुविनेट करना है. और इसमें ब्लू लाइफ एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, विच इज कॉल्ड एज द हर्बल डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिजुविनेशन. सो 5 अलग प्रोडक्ट है. Liver support, herbal detoxification, to ensure your body is detoxified completely. And after 7 days, 8th days to 14th day, your body, you have to rejuvenate. So along with that, there is an herbal tea for 14 days. So all the 14 days you should start, having the herbal tea. So 30 unique ingredients, 30 water soluble ingredients packed in 5 different product for 4 different purpose and 5 different action. So liver support will ensure that your body's metabolic function is improved, especially when it comes to your weight loss. Metabolic function has to improve. Your organs will start, functioning better, especially the liver, and your absorption will become much much better. So आपका absorption ratio, ratio बढ़ जाएगा, and nutrition का absorption भी
अच्छे तरीके से होगा. And most important, your metabolic function, because liver is the gatekeeper of your body. It is responsible for more than 200 activities in your system. So along with that, there is a herbal tea also. So first customer has to do is, okay, 14 days of detoxification. After that, 3 months he has to go with the regime, and we have three products. One is a herbal tea, then is a protein nutrition shake mix, and we have the blue lean. And so three products. का क्यों हमें ये तीन products चाहिए? You have to understand why we need these three products. Now, to lose weight, whenever, always please understand that whenever you feel hungry, do not go and eat something. First, you drink a glass of water. So, because your body can be managed even while drinking, water also. So, जब आपको भूख लगता है, immediately जाके खाना मत खाइएगा. Just first you take a drink of, glass of water, especially warm water. The same way, body is made of 70% of water, so your body needs to hydrate. अगर आप एक अच्छा weight loss करना चाहते हैं, your liquid intake should be higher and higher. At our Blue Life, उस हाइड्रेशन के लिए एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट लेके आया है. उसका नाम है हर्बल टी. सो इट इज नॉट जस्ट ए टी, इट इज है हर्बल टी. व्हाई इट इज अ हर्बल टी? सो इट कंटेन्स ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट. प्लीज रिमेंबर, इट इज नॉट ग्रीन टी लीव्स. ग्रीन टी लीव्स का एक्सट्रैक्ट है. उसमें वृक्षामला का एक्सट्रैक्ट है, और त्रिकुटी का एक्सट्रैक्ट है, और तुलसी का एक्सट्रैक्ट है. सो ग्रीन टी और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट में फर्क क्या है? 100 किलो का ग्रीन टी और 10 किलो का एक्सट्रैक्ट दोनों सेम है. इट इज यू एज गुड एज 100 किलो ऑफ ग्रीन टी लीव्स एंड 10 kilos of green tea extract are both the same with the same potency. So blue, it's a ready to drink tea hai, and it's we call this as a slim tea because it helps in weight loss. So every day morning, minimum 300 ml you have to have in what, hot water. First thing is you have to take this herbal tea. So the first thing in the morning after brushing your teeth should be that you will be consuming this herbal tea. Now, how this works: green tea is very rich in catechin, and it is high in antioxidant. So you're giving, instead of a normal caffeine or a normal tea which is milk based, calorie high in calorie, you are giving something very, very refreshing and body friendly. So green tea is rich in, green tea is known for weight loss, no doubt. और उसके साथ है एक और ingredient, उसका नाम है वृक्षामला. What is वृक्षामला? It is called as a Garcinia indica. In Kerala, we have something called as Garcinia cambogia. In the western, especially in the Goa or in the coastline of, the Western Ghat, there are the same cousin. It is called as Garcinia indica. We call this as a kokum. And kokum and Cambodia, dono, there is something called as HCA. It's called as a chemical, it's a molecule which in Vrikshamla, which is called as HCA. वो करता क्या है? It can convert your fat into energy. So जब आप herbal tea पियेंगे, रिफ्रेशिंग होगा, तुलसी भी है, त्रिकुटु है, डाइजेशन बढ़िया होगा, और साथ साथ वृक्षामला का वजह से योर बॉडी कैन लूज फैट, कन्वर्ट फैट इनटू एनर्जी. मतलब अगर आप हर्बल टी पियेंगे और 15 मिनट को, 10-15 मिनट वेट करेंगे, योर satiety will, you'll have satiety, means you will not feel so much hunger, so you will eat your breakfast very, very low. So the first step is start with detox 14 days. Then every day morning, start with herbal tea. And the next is your nutrition shake mix. Now, nutrition shake mix comes with two flavor. One is the mango and the vanilla. And why it is called as a nutritional shake mix? Because it is rich in protein. 33% protein है. It is rich in fiber. Almost dietary fiber is high, so that आपका breakdown easy हो जाएगा. Also, it contains vitamins and minerals, especially vitamins like B.
all the B category, the B1, B2, B4, all these things are there in this particular nutrition shake mix. So ये सिर्फ एक न्यू protein shake नहीं है, it is a complete meal with high quality protein. So why protein is important for weight loss? Okay, because जब आप protein food खाएंगे, your भूख जो आपका खाने का नेक्स्ट मील, क्योंकि ये स्लोली डाइजेस्ट होता है, इट विल टेक योर नेक्स्ट मील विल बी विथ अ लॉन्ग पीरियड. सो द ब्रेक डाउन, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, एंड दैट इज वे इट द प्रोटीन इज द बेस्ट thing for your for weight loss. Metabolic boost, when I say metabolic boost here, as I mentioned, it also helps to burn the expenditure, आपका metabolic rate को improve करने में मदद करेगा. And it is very very nutrient density, protein में जैसे हमारा प्रोटीन शेक है, इट इज ऑल्सो हैव्स ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो जो बॉडी को जो एक प्रोटीन, एक नॉर्मली एक ब्रेकफास्ट में जो चीज चाहिए, एवरीथिंग इज देयर. इट हैज गॉट हाई इन प्रोटीन, 33% प्रोटीन है, फाइबर इज देयर, vitamins is there, minerals is there. Then why protein is very important is because जब आप वेट लॉस करते हैं, कुछ लोग क्रैश क्रैश डाइट में जाएंगे, वो वेट लॉस प्रोग्राम करेंगे कुछ कंपनी का नाम से, ये नाम से, बनाना, बनाना व्हाट यू कॉल दैट, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग करेंगे कुछ लोग, बनाना वेट लॉस, सम पीपल आर गोइंग ऑन ऑरेंज juice. No, why? When you're on weight loss, the body will start breaking down, including your tissue, muscle tissue. एनर्जी कम मिलेगा, तो बॉडी क्या करेगा, आपका मसल से टिश्यू को भी ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा. मतलब when you're on weight loss, you have to be very careful, because you might lose weight, but also you will lose muscle mass. So but when you're taking protein as a for weight loss, which is rich in protein, then your lean muscle mass is preserved, so you will not lose, a muscle mass का loss नहीं होगा. So always never advise anybody to go on something coming on the internet or something coming on a YouTube. आप ट्राई करो 10 दिन में इतना वेट लॉस तो होगा ही होगा, साथ साथ आपका मसल लॉस भी हो सकता है. सो ऑलवेज, that is why protein is compulsory, because as you are losing weight, your muscle mass or lean muscle mass should not be lost, and protein is the best thing for repairing your muscle and also for growth and including the tissue. So प्लस द प्रोटीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है आपका बॉडी में एक हीट जनरेट करना, थर्मिक इफेक्ट बोलते हैं. सो ऑटोमेटिकली ये ज्यादा थर्मिक इफेक्ट होने की वजह से आपका फैट को डाइजेस्ट करने में, मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म में बढ़िया काम आएगा. एंड अगर आपका बॉडी में हाई प्रोटीन है, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन फूड खाते हैं और हाई फाइबर भी है, then automatically आपका blood sugar regulation also can be managed. The latest report, I was seeing a report, आप देखेंगे, it is saying that how many times आपका ब्लड शुगर ऊपर नीचे होता है, उतना जल्दी आपका सेल का एज भी होता है. सो ग्लाइकेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द से एजिंग ऑफ योर सेल. मतलब ही सेज दैट एवरी डे यू आर कुकिंग, जितना आपका ब्लड शुगर का स्पाइक होगा, उतना आपका एजिंग होने का प्रोसेस भी चालू हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रोटीन रिच डाइट. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन्स? सिर्फ प्रोटीन ही चाहिए क्या? आपको विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, क्योंकि विटामिन बी, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था, स्पेशली B1, B2 और B3, B5, B6 एंड B12, ये सब चीज आपको फूड को एनर्जी कन्वर्ट करने में मदद भी आएगा, और आपको वेट लॉस में बढ़िया से काम आएगा, और एनर्जी प्रोडक्शन में आपका वे भूख को कम करने में, ये सब चीज के लिए माइक्रो न्यूट्रिशन का जरूरत है, उसका नाम है विटामिन एंड मिनरल्स. सो ब्लू लाइफ का प्रोटीन शेक इज अ मोस्ट important and most uh, it's a complete balanced food, we can say, for weight loss. It contains high in protein, it contains fiber, it contains vitamins and minerals. Now the final question comes is, why blue life protein?
करेक्ट। सो प्रोटीन जब आप सेलेक्ट करेंगे, प्रोटीन के लिए क्या क्या है ऑप्शन है, आप अंडे खा सकते हैं, नट्स एंड पीनट्स खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, वेराइटीज ऑफ वेराइटीज ऑफ चीजें हैं जो आपको ये, लेकिन why you have to choose blue life protein is because the PDCA score is 1. Now what is PDCA score 1? Because PDCA score 1 means it's a complete, जो प्रोटीन को जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स का जो कंप्लीट प्रोफाइल चाहिए वो पूरा कंप्लीट रहेगा, दैट इज वेयर योर पीडीका स्कोर बिकम्स 1। क्योंकि हर एक प्रोटीन में ये हर एक एसेंशियल न्यूट्रिशन या हर एक एसेंशियल अमीनो एसिड होना जरूरी नहीं है, स्पेशली अ वेजिटेरियन। सो द द एंड सेकेंड रीजन इज द पिडिका स्कोर 1 का मतलब है कि ये प्रोटीन जो डाइजेस्ट होने का जो स्पीड है वो जल्दी हो सकता है। सो इट ऑल्सो कंटेन्स फुल एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्लस द हाउ फास्ट इट इज एबल टू डाइजेस्ट। अगर आपका प्रोटीन डाइजेस्ट जल्दी से नहीं होगा, वो बाई प्रोडक्ट बनेगा एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट एंड इट कैन ऐड मोर लोड टू योर किडनी। सो दैट इज वाई PDCA score 1 becomes very, very important. So you understood weight loss, sorry, you understood obesity. Why obesity is, why obesity, it is not just accumulating fat, it is also because the distribution, that means आपका intake और आपका expenditure में एक बैंक क्या बोलते हैं, there is a huge gap between what you're giving in and what is expenditure. So now the second thing is how your body's expenditure can be increased. Now you can increase it, the BMR can be increased it only if you're doing exercise, or you should eat the right supplement, and this one. So protein shake. So herbal tea se shuru kiya, and you're having a nutrition shake mix which is vanilla and mango. Currently, we have two flavors. So one day you can have vanilla, one day you can have mango. There are people who can mix, they mix both the thing, half scoop A or A. So एक scoop लीजिएगा, you can add skimmed milk or a cream milk or a cream powder, skimmed milk powder भी आप add कर सकते हैं if you're not okay with milk. So mix it, and if possible you can put little a small banana which we call as a in it's not the robust or the big banana, the small one, and mix it, make it as a badia shake, and you can start drinking it. Very tasty, very yummy, and it takes good. So first you add herbal tea which is around 300 300 ml to 400 ml. Then you add 250 ml of thick protein shake added with one banana, so that both put together is close to a liter, and you're ready to go for your office, ready to go for your college, ready to go for your whatever activity your body has received what it has to receive. Along with that, we have a great product which is called as Bluline. Why? Because it contains 40% saponin and for 22 percentage caffeine. Again, 40% saponin कहाँ से आ रहा है? It is coming from moringa, or is 22% caffeine from guarana seeds. So it is it's something, it's a Brazilian bean, and from there we take the caffeine, which is a high quality caffeine. Now, why this product is required? So herbal tea, it helps to hydrate, it helps to detox also, and because of the digestion improve हो सकता है, और and it is a powerful antioxidant. And second thing is because of kokum, your fat can be converted into energy. Then you have a protein shake, which is a highly nutritious shake with vitamins and minerals with a high score of 1, which is the best score for a protein, means the highly digestibility, the better, the highly absorbing the protein, high quality protein with all the essential amino acids, plus fast, super fast to digest. So उसके अलावा कोई दूसरा प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन स्पीड का स्कोर 1 मीन्स it is the most highest quality grade of protein. And third is your product which is called as Bluline. ये क्या करता है? आपका बॉडी का बीएमआर कोई इंक्रीज करने में मदद करेगा, क्योंकि इसमें दो इंग्रेडिएंट है, एक सैपोनिन और एक कैफाइन, ये दोनों मिलकर बॉडी को
थर्मोजेनेसिस आपका फैट को बर्न करने में मदद करेगा। सो एक साइड आपने अच्छा सा न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट खाया विच इज प्रोटीन शेक, एंड दूसरा तरफ से ये कैप्सूल डालेंगे, इट विल इंक्रीज द बीएमआर एंड विल स्टार्ट बर्निंग all the fats in your body. So scientifically proven है, एंटी ओबेसिटी एक्शन, डिक्रीज इन कैलोरी अब्जॉर्प्शन, सो कैलोरी अब्जॉर्प्शन में कम करेगा, स्पेशली आपका मोरिंगा का सैपोनिन्स, और कैफीन आपको मेटाबॉलिक या थर्मोजेनेसिस में मदद करेगा, फैट को जल्दी बर्न करने में मदद करेगा, एंड डिक्रीज इन कैलोरी इनटेक, and very and it's also the entire central nervous system can be stimulated from caffeine. And so it is a beautiful combination. It is like a team, it's like a team. So you started with detox, cleanse your system, ready to absorb nutrition को absorb करने में तैयार है, and it is already it's completely detox. It is like you have cleansed your entire body and waiting to have the best product. So start with herbal tea, then 15 minutes, 10 to 15 minutes gap, you can have your protein shake, then you can have your capsule. So the blue lean capsule can be for 2 days, sorry, two in a day, that is morning and evening. So this is like an activator. ये आपका body को heat को या expenditure को maintain करेगा, and it increases the BMR, the basal metabolic. So why this is important? Blue lean is, you might lose weight, no problem, because you have set a goal. I have to lose 10 kilo. फट बोल के आपका हो सकता है, because I have seen people losing 20 kilos, 24 kilos in blue life. But after that, you have to maintain. To maintain करने के लिए, blue lean becomes very important, because blue lean increases your resting metabolic rate. So your weight management is very easy. Otherwise, what will happen is, कुछ लोग डाइट डाइट हो गया, अच्छा बढ़िया हो गया, उसके बाद दोबारा वही लाइफ साइकिल, अगेन द लाइफ स्टाइल स्टार्ट्स, एंड अगेन दे पुट ऑन वेट मच फास्टर, एंड उसके बाद वेट लॉस के लिए दोबारा ट्राई करेंगे, बॉडी बोलेगा बॉस एक बार मुझे चीट कर सकते हैं, दोबारा दोबारा नहीं है. सो दैट इज वाई बोथ आर इंपॉर्टेंट. योर इनटेक ऑफ कैलोरी, what quality of calorie, is it coming from carbohydrate or is it coming from protein, is important. Second, so we are giving a protein rich diet with vitamins and minerals. So second thing is how the BMR can be rest basal metabolic rate, because आपका एज बढ़ते जाएगा, naturally आपका metabolic rate कम ही होगा, and your body, so expenditure cannot be done. So that is why the blue lean as a product will help you in doing this. So finally, we have a great product. So three product, 3 months, three product, and only one goal. So as per, we have got amazing testimonies, and we have seen somebody losing 24 kilos in 60 days, so 90 days. But please ensure there is some physical activity. I'm not saying that आपको gym जाना है, rigorous workout करना है. Do some workout, do some activity, so that your body's better metabolic rate increases. So jogging, you're walking, brisk walking, all this thing is compulsory, but ensure that you have to have your breakfast as your, this one. So पहला कुछ दिन हो सकता है कि, आपको भूख लगे, क्रेविंग आएगा. सो तब आप एक मिड मिड मॉर्निंग मील कुछ खा सकते. मील नहीं है, आप सैलड या कुकुम्बर का सैलड, लो कैलोरी जैसा सैलड, कैरेट, ऐसा आप खा सकते हैं. एंड धीरे धीरे एक हफ्ते के अंदर यू विल सी दैट यू आर ओके. सो इफ यू आर हैविंग अ protein shake in the morning at 9 o'clock till 1 o'clock, I'm sure you will be well, good to go. And ensure that your afternoon meal also is taken moderately, and the evening should be much more moderate, so that you quickly reduce weight. And that is how you can plan. So 3 months, three product. So दोस्तों, यही है ब्लू लाइफ का प्रोडक्ट. एंड सो थैंक यू वेरी मच. हैव अ वंडरफुल डे, ग्रेट डे.